So let us start with our very important topic, right? So what we have seen so far is that there are ICs, right? And ICs are what? What is full form for ICs? Integrated Integrated circuit. Integrated circuits. circuits, right? And then ICs we can classify into several types, right? But basically we can classify the ICs into two types. One are your analog ICs and second are your digital ICs, Digital. right? Digital. So in analog ICs, we will be studying one very important IC, and that IC is called as IC number 741, right? So इसका मतलब ये होता है, right? IC number 741, right? Or we can say analog IC में we will see linear integrated circuits, right? So what are your linear integrated circuits? They are nothing but your, yes, operational amplifiers, right? Now what operational amplifier, I will write it as amp, right? AMP, op amp, ऐसे लिखूंगा op amp, right? So these are your this is your analog IC, right? So what is operational amplifier? What is operational amplifier? Yes, so it is nothing but a device, right? It is nothing but a circuit, right? It is nothing but a circuit, or it is nothing but a device, right? Which will perform various operations, right? Which operations? Various mathematical operations, right? Like addition, right? Subtraction, multiplication, or integration, right? And then differentiation, right? So all these operations are performed by a device, and that device is called as your operational amplifier. Is it clear? Yes, no? Yes, sir. Okay, Yes. okay. Now, see, what is the symbol for operational amplifier? So the symbol for operational amplifier is very simple, right? So we need to draw a triangle, right? So we will first discuss, right, the symbol of this operational amplifier. देखिए जब हमने डायोड सीखा था तो कैसे सीखा था? First we had seen its internal, what we can say, we have seen first the construction, right? And once we have seen the construction, after that we have seen I have given you the symbol, right? हियर वी विल गो, थोड़ा उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे, पहले सिंबल पे बताता हूँ, बाद में फिर इसके अंदर क्या रहेगा वो हम जानते हैं, राइट? सो इस सिंबल में, राइट, देयर आर टू इनपुट्स, ओके, एंड देयर इज वन आउटपुट, ओके, एंड देन देयर आर टू पावर सप्लाईज, ओके, देयर आर टू पावर सप्लाईज. तो इसके अंदर क्या रहेगा पता है? आप ऐसे समझ लीजिए, इसके अंदर रहेंगे कितने एम्पलीफायर, नहीं तो कितने ट्रांजिस्टर? दो ट्रांजिस्टर, राइट? सो दो ट्रांजिस्टर के लिए कितने इनपुट्स रहेंगे? दो इनपुट्स, ओके. सो पहला रहेगा नॉन इन्वर्टिंग, दूसरा रहेगा इन्वर्टिंग, राइट? ओके. तो देखिए पहला जो इनपुट है उसको हम क्या बोलेंगे? पहले इनपुट को बोलेंगे हम इन्वर्टिंग इनपुट. क्या बोलेंगे? इन्वर्टिंग इनपुट. दूसरे को क्या बोलेंगे? नॉन inverting input, right? And then there is output, okay, there is output, okay. And then this is your one of the power supply, that is plus VCC, and this is your another power supply, that is your minus VCC, right? So दो पावर सप्लाईज है आपके पास में, प्लस VCC माइनस VCC, दो इनपुट्स है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, एक आउटपुट है, राइट? सो हाउ मेनी टर्मिनल्स, हाउ मेनी पिंस हो गए? 1 2 3 4 5. तो ये जो आईसी है, ये आईसी ये जो सर्किट है, ये सर्किट कौन से आईसी में आता है? सो दिस सर्किट कम्स इन द आईसी कॉल्ड एज आईसी 741, राइट? If you want to purchase operational amplifier, you need to go to the shop and then you need to ask him, give me IC number 741. So whatever IC you will get, right? So in that IC you will get this operational amplifier circuit, right? So we will deal with this IC later on, right? First of all, let us see what is operational amplifier. Okay, so how many inputs? Two inputs. Two inputs. How many outputs? One output.
वन आउटपुट। ओके, one output. हम थोड़ा इसको नाम भी दे देते हैं, राइट। तो इन्वर्टिंग इनपुट को हम बोलते हैं, इन्वर्टिंग इनपुट को बोलते, ओके, नॉन इन्वर्टिंग को हम V1 बोलेंगे और इन्वर्टिंग को हम V2 बोलेंगे, राइट। इन्वर्टिंग को, नॉन इन्वर्टिंग को V1 और इन्वर्टिंग को V2, एंड दिस इज योर आउटपुट। ओके, नाउ सुनिए, so this amplifier, right, this amplifier I can make it to work in two modes। कितने मोड्स में काम करवा सकता हूँ मैं इसको? दो Two. मोड में काम करवा सकता हूँ, राइट। सो लेट अस सी विच आर द टू मोड्स। ओके, सो मैंने सेम डायग्राम लिया है, राइट। आई हैव टेकन सेम डायग्राम। So it's better for comparison for me at least, right? Okay, so what I will be doing, okay. So is it the same diagram? Yes. Okay. Yes, sir. So I have taken the operational amplifier, and then what I am doing, what I am doing, right? So now we will just see modes of operation, right? Modes, op amp modes बोलेंगे इसको। Okay. Now see, uh, so in which modes we can use, okay, the operational amplifier, in which mode we can use the operational amplifier? So your first mode is single ended mode। पहला कौन सा मोड है आपका? सिंगल एंडेड मोड, राइट। single ended mode, right? First mode is your single ended mode। Okay, so what is your single ended mode? So with red color I will just give the input। Okay, so input कहां पर देंगे हम लोग? कौन से टर्मिनल को देंगे? V1 या V2? Both. Both. ओके, सो ओके, आप बोलेंगे पहले आप V1 को दीजिए। सो आई एम गिविंग द इनपुट टू V1। सो लेट अस से दिस इज योर V in, right? So can I say V in is equal to V1 now, right? Yes, sir. V1 is equal to V in, and here let us say that I am giving input to V2, right? So this is your input terminal. Yes. Okay. So single-ended mode means what? I am giving input to only one terminal. Another terminal I am just directly connecting it to ground. So यहाँ पर ये terminal मैंने ground को connect किया. So that's why this mode is called as your single-ended mode, where input is given to only one terminal, right? Input is given to only one terminal. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, but where can we use this? So I will show you, right? I'm just first just let us see how many modes are there, then we can see the application, right? पहले भी डायोड हमने पहले सीखा ना कैसे काम करता है, उसके बाद में फिर एप्लीकेशन देखा, राइट। तो पहले ये, Yes, sir. हाँ, ये भी देख लेते हैं पहले। ओके, नाउ लेट अस से दैट द इनपुट सिग्नल इज लाइक दिस, इनपुट सिग्नल इज लाइक दिस, राइट। सो इसके नाम में ही एम्पलीफायर है, राइट। दिस इज योर एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, so whenever you are giving input as a sine wave, right, to which terminal? To non-inverting terminal, right, you will out at the output you will get sine wave only, right, and there will be how many degree phase shift between input and output? 0 degree. 0 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, राइट। सो जब हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट देंगे तो एम्पलीफाई होगा, लेकिन फेज शिफ्ट होगा क्या? नहीं, देयर विल बी 0 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, करेक्ट? यस, नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now let us suppose that I am giving the input, to inverting terminal. So at the output also you will get sine wave only with increased amplitude, but there will be 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। ओके, मतलब देखिए if I'm just saying that gain of this amplifier is A, if gain of this amplifier is A,
then yes, output is what? Normally, A is what? Output upon input. So V naught क्या होगा फिर? A times input, correct? Yes, sir. So यहाँ पर ये कौन सा है? Single ended mode. Input is given to non-inverting terminal. So this will be A times V in, correct? Yes, sir. Okay. And यहाँ पर output कैसा रहेगा? A times V in. लेकिन साइन क्या रहेगा यहाँ पर? नेगेटिव। माइनस। ये कैसे आएगा बाद में बताता हूँ मैं। ओके, लेकिन सिंगल एंडेड मोड में हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। वन, आई कैन गिव द इनपुट टू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, एंड सेकंड आई कैन गिव इनपुट टू इन्वर्टिंग टर्मिनल, where when I am giving the input to non-inverting terminal there will be 0 degree phase shift, and whenever I am giving input to non-inverting terminal there will be 180-degree phase shift. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, any problem in this? No, sir. No, sir. Okay, great. Now what I will do, I will just take one more operational amplifier. I'll just take one more operational amplifier. Okay. Okay. So this is your operational amplifier, isn't it? Right? Same. Yes, sir. Okay. So what I will do, now you will just say, okay, sir, दोनों को हम input दे सकते हैं क्या? So the answer is yes, we can give input to both of them at a same time. So this is your output terminal, V naught. Okay. And what I will do, I will just give an input here, 0 volts. Let us say that this input is your VA. VA is equal to V1 now here, correct? And let us say यहाँ पर input number 2 दे रहा हूँ, VB. So VB is nothing but your V2 here, correct? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. And whatever input is available between the two terminal, that input I will call it as VD. What is VD? What is VD? Differential V1 plus input. V2. V1 minus V2, क्योंकि A plus V1 minus V2, correct? Yes, sir. Yes, sir. So इसको क्या बोलेंगे हम? डिफरेंशियल इनपुट। क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल। डिफरेंस है ना दोनों में से, दोनों में का? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. और जो कुछ गेन है ये एम्पलीफायर का, इसको बोलेंगे डिफरेंशियल गेन। क्या बोलेंगे इसको? डिफरेंशियल गेन। सो व्हाट इज योर वी नॉट? एडी टाइम्स वीडी, करेक्ट? सो एडी टाइम्स V1 V1 माइनस minus V2. V2। सो इस मोड को हम बोलेंगे डिफरेंशियल मोड, राइट? वी आर यूजिंग द एम्पलीफायर इन विच मोड? डिफरेंशियल मोड। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, अभी देखिए, नाउ इट्स वेरी सिंपल। ओके, अगर अगर ये कौन सा है? विच इज दिस टर्मिनल? दिस इज इन्वर्टिंग, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग, Non-inverting. राइट? अभी देखिए, सिंगल एंडेड मोड में इन्वर्टिंग को अगर वोल्टेज दिया तो क्या प्रेजेंट रहेगा? V2 प्रेजेंट रहेगा, V1 क्या रहेगा? 0 रहेगा, पिछले केस में, राइट? यहाँ पर देखिए V1 क्या था? यहाँ पर V1 was 0, करेक्ट? बराबर है, दिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, यहाँ पर अगर V1 0 है तो V नॉट इज व्हाट? माइनस। माइनस बाहर आ जाएगा, AD टाइम्स V2, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर माइनस आ गया। यस, नो? ये Yes, साइड sir. समझ में आया Yes, कैसे sir. है? Yes, sir. So this is your second mode. This is called as your differential mode. So always your amplifier will always amplify the difference voltage. कौन सा voltage amplify करेगा वो? Difference voltage. Yes, no? Yes. Yes, Yes, sir. Okay, okay. Now your third one is your, अभी देखिए सिंगल एंडेड मोड हो गया, डिफरेंस मोड हो गया। ओके, अभी कौन सा मोड हो सकता है? एनीवन गेस? कैन यू गेस?
Integrated. Huh? Yes. Which mode is remaining? चलो बोलो क्या कर सकता हूं मैं, दोनों को कॉमन दे सकता हूँ ना सिग्नल। यस, Yes, sir. Yes, sir. बराबर है। सो वी इन, सो इज कॉमन टू बोथ द टर्मिनल, सो इसको क्या बोलूंगा मैं, कॉमन मोड। क्या बोलूंगा, कॉमन मोड। कॉमन मोड। ओके, तो देखिए कॉमन मोड में जो गेन है उसको मैं एसी बोलता हूँ, कॉमन मोड गेन, बराबर है। तो एडी मतलब क्या हो गया आपका, एडी मतलब क्या हो गया, डिफरेंशियल मोड गेन। एसी मतलब क्या हुआ, कॉमन मोड गेन। यस नो, तो वी नॉट क्या आएगा आपका, एसी टाइम्स वीडी। व्हाट इज वीडी, difference between the two inputs. So VD is Silicon. equal to V1 minus V2. What is V1? V in. V1 is equal to V2 is equal to V in. Yes, no? Yes, sir. Yes, So sir. zero. यही voltage, हाँ. So therefore this is V in minus V in. So ideally VD is zero. So practically, right? This should be also zero. Output V naught should also be zero. Yes, no? Yes, sir. Correct? Yes, no? Yes, So sir. in common mode gain, this is your ideal condition, right? So in common mode, right, you should not get output, okay? But practically you will get some output. So उसके बारे में बाद में देखते हैं, okay? सुनिए अभी, सुनिए हाँ, डिफरेंशियल मोड गेन एडी, डिफरेंशियल मोड गेन क्या बोलते हैं आप इसको, एडी, ओके। तो देखिए आप, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आउटपुट, ये डिफरेंशियल मोड एडी, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एडी, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एडी। आइडियली इसका वैल्यू कैसा चाहिए, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, कम चाहिए। यस सी, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या रहते हैं, विथ लेस इनपुट आई शुड गेट मैक्सिमम आउटपुट, है ना। 1 लीटर डालूंगा तेल गाड़ी में तो गाड़ी कम से कम 200 किलोमीटर चलना चाहिए, ये तो आपके एक्सपेक्टेशन रहते हैं ना। यस नो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है ना। No, sir. With very small amount of study, with 5 minutes of study, I should score 90%. बराबर है? Yes, no. Yes, sir. Less Sir. input, maximum output. So, gain कैसा चाहिए आपको? ज्यादा। Dada. Very high. वेरी हाई। Yes, no. यस Yes, सर। sir. Ideally, the value of gain should be infinite. Practically, we will see it later on. Getting, so differential mode gain should be very high, and differential mode gain is very high in case of amplifier, right? कॉमन मोड आउटपुट आइडियली कैसे आना चाहिए, जीरो होना चाहिए, राइट। अगर गलती से वीडी जीरो नहीं होता है तो भी आउटपुट जीरो आने के लिए आइडियली द वैल्यू ऑफ कॉमन मोड गेन शुड बी जीरो। समझ में आया? Yes, sir. यस नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये सिर्फ मैंने क्या बताया आपको, ये सिर्फ मैंने बताया कि हम जो एम्पलीफायर है वी कैन यूज इट इन विच, हाउ मेनी मोड्स, 3 मोड्स। वन इज योर Single end. सिंगल एंडेड मोड। सिंगल एंडेड में दो प्रकार के, एक है इन्वर्टिंग, दूसरा है नॉन इन्वर्टिंग। Non-inverting. इट इज डिफरेंशियल मोड, एंड थर्ड इज योर कॉमन मोड। एनी Common. प्रॉब्लम इन दिस? No, sir. So in this way we can use the operational amplifiers. What will be the phase shift in differential mode and common mode, sir? वो तो डिपेंड होता है ना, कॉमन मोड में तो फेज शिफ्ट होना ही नहीं है, जीरो मिलना चाहिए। इनपुट में कुछ भी दे दो आप, आउटपुट में कितना मिलना चाहिए, जीरो। Zero. ओके, और डिफरेंशियल मोड में तो डिपेंड करता है, V1 बड़ा होगा तो फिर पॉजिटिव 0 डिग्री फेज शिफ्ट, V2 बड़ा होगा तो फिर 180 डिग्री फेज शिफ्ट। समझ में आया? Yes, sir. Yes, इट sir. डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 ना, बराबर है। Yes, sir. V1 बड़ा आएगा तो ये जो है, राइट, दिस पार्ट विल बी पॉजिटिव, सो नो फेज शिफ्ट। अगर V2 बड़ा है तो दिस पार्ट विल बी नेगेटिव 180, 180 degree phase shift. राइट। एनी प्रॉब्लम इन दिस? No, sir. ओके ओके, तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसको मैंने कैसे बताया अभी तक, इसको मैंने कैसे बताया, एक ब्लॉक में बताया, राइट।
कैसे बताया? यस, कैसे बताया? ट्रायंगल में बताया ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके, सो okay, so I have shown you the operational amplifier with the help of the symbol. Okay, how is the symbol? The symbol is like this. बराबर है, ऐसा ही बताया था ना? Correct. Yes, How Yes, sir. many sir. inputs? Two inputs. How many output? One out. One output. Okay. Okay. So now, what is inside this? What is inside this? So inside this amplifier, we are having different blocks, right? So let me draw block number one. Let me draw block number one, right? तो इसके अंदर different blocks है, right? So इसके अंदर कौन से blocks है? So इसके अंदर है block number one, right? Then इसके अंदर second block है, that is block number two. Then third block, right? Block number three. And then finally, it is having last block, that is block number four. And ये देखिए, पहला जो ब्लॉक है, सुनिए, पहला जो ब्लॉक है उसको इनपुट्स कितने रहेंगे? दो इनपुट्स. How many inputs? Two Two inputs. inputs. Two How inputs. many outputs? Two outputs. Two outputs. ओके, जो दूसरा ब्लॉक है उसको इनपुट्स कितने रहेंगे? Two. 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 कितने रहेंगे? ओनली वन. One. एंड देन थर्ड ब्लॉक का आउटपुट फोर्थ को, और फोर्थ ब्लॉक का आउटपुट आपका फाइनल आउटपुट रहेगा. करेक्ट? Okay, sir. गेटिंग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो ये सिर्फ ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं मैं, राइट? नाउ लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज योर फर्स्ट ब्लॉक. लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज योर फर्स्ट ब्लॉक, राइट? ओके, सो फर्स्ट ब्लॉक, योर फर्स्ट ब्लॉक, यहाँ पर वोल्टेज मैं बोलूंगा दिस इज योर V2, दिस इज योर V1, राइट? सो व्हाट इज V1? This is your non-inverting terminal. What is this? Non-inverting terminal. What is V2? This is your inverting terminal. बराबर है? बराबर है ना? हमने इसको माइनस बोला था, Yes, sir. बराबर है, और इसको हमने बोला था प्लस. यस नो? ब्लॉक डायग्राम में, Yes, sir. अपने Yes, sir. triangle वाले डायग्राम में. ओके, नाउ just see, I will just see, I will just show you what is your first block, right? So what is the first block? So first block को हम पहले नाम दे देते हैं. यहाँ पर first block को हम पहले इसको नाम दे देते हैं. This is your input stage. क्या बोलेंगे हम इसको? Input stage. stage, right? Okay, second block को क्या बोलेंगे हम? Second block को बोलेंगे intermediate stage. क्या बोलेंगे? Intermediate state. Intermediate stage, right? थर्ड ब्लॉक को क्या बोलेंगे? थर्ड ब्लॉक को बोलेंगे लेवल शिफ्टिंग स्टेज. क्या बोलेंगे? लेवल शिफ्टिंग स्टेज. एंड लास्ट को बोलिए, क्या बोलेंगे? बोलिए. Output stage. आउटपुट स्टेज. करेक्ट? यस नो? Yes, sir. ओके ओके, नाउ सुनिए, हाँ, वेरी केयरफुली. सी, व्हाट इज योर फर्स्ट ब्लॉक? हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर? टू इनपुट्स. Two. So can I say it is dual input? Yes, no? Yes, sir. How many it is? Yes. How many outputs? Two outputs, Two right? outputs. So अगर दो इनपुट है, दो आउटपुट है, तो उस सर्किट को बोलेंगे बैलेंस्ड सर्किट. क्या बोलेंगे? Balanced, sir. Balance circuit. So dual input, balanced output, right? जिस सर्किट का आउटपुट बैलेंस है उसको बैलेंस्ड आउटपुट बोलेंगे. डुअल इनपुट, बैलेंस्ड आउटपुट, डिफरेंशियल एम्पलीफायर. करेक्ट?
पहले स्टेज में क्या रहेगा, 2 इनपुट वाला डिफरेंशियल एम्पलीफायर रहेगा। डिफरेंशियल क्यों? बिकॉज इट इज एम्पलीफाइंग द डिफरेंस बिटवीन द 2 इनपुट्स। करेक्ट? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इसका फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फर्स्ट ब्लॉक? इट विल प्रोवाइड हाई इनपुट रेजिस्टेंस। इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, राइट? एंड व्हाट इट विल डू, व्हाट इज द फंक्शन? इट विल एम्पलीफाई वीडी। वीडी मतलब क्या? Voltage V1 माइनस difference. V2। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Getting पहले का फंक्शन। Okay, let us concentrate on second function, right? So what is your second block? Second block, intermediate stage, right? Okay, आप बताइए अभी मुझे क्या लिखूं मैं यहाँ पर? Two Dual input. input, Two inputs. हाँ, बैलेंस है। unbalanced output, Unbalanced output. कौन सा एम्पलीफायर? differential, Differential. Differential amplifier. Why? Because it is amplifying the difference between the two signals, right? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्यों यूज करते हैं हम? वाई वी आर यूजिंग दिस? क्योंकि ये सिर्फ क्या करेगा, जो इनपुट है उसको लेगा, राइट? बट दिस इंटरमीडिएट स्टेज विल इंक्रीज द गेन ऑफ द signal, right? It is specifically used to increase gain। ये इसका काम क्या है? गेन को इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब इनपुट अगर 2 मिली वोल्ट्स है तो इसका इनपुट रहेगा 5 मिली वोल्ट्स। सो 5 मिली वोल्ट्स को लेट अस से आउटपुट में 50 मिली वोल्ट्स करना है, राइट? नहीं तो 500 मिली वोल्ट्स करना है। तो वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द गेन, वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 100, राइट? So the intermediate stage will increase the gain and it will convert it into single output. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. इसमें तो एम्पलीफायर को क्या लगेगा? डीसी पावर सप्लाई लगेगा ना, प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी, बराबर है? Yes, sir. करेक्ट? Yes, yes sir. sir, Yes, sir. आपके सर्किट में हमने यहाँ पर ऐसे बताया था, दिस यहाँ से कुछ एक टर्मिनल निकलेगा, उसको हम बोलेंगे प्लस वीसीसी। यहाँ से टर्मिनल निकलेगा, उसको हम बोलेंगे माइनस वीसीसी, राइट? Yes. Yes, sir. yes sir, सो ये है प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी, ये क्या है? पावर सप्लाई है, राइट? एसी डीसी, A. डीसी DC. पावर सप्लाई। DC power supply. ओके, तो अगर ये डीसी पावर सप्लाई है तो क्या हो रहा है? डीसी सिग्नल इज गेटिंग एडेड। डीसी सिग्नल ऐड हो रहा है तो फिर सिग्नल का लेवल डीसी से शिफ्ट हो रहा है। यस नो? जैसे 5 वोल्ट ऐड हो गया आईसी में तो 5 वोल्ट से ऊपर सरक गया आईसी सिग्नल हमारा। Yes, sir. तो वो 5 वोल्ट से ऊपर अगर सरकेगा तो इस डीसी सिग्नल आउटपुट में चाहिए हमें एम्पलीफायर में। यस और नो? यू टू? Yes, sir. Yes, sir. yes डीसी sir, सिग्नल आउटपुट के एम्पलीफायर में चाहिए? no sir, No, नहीं sir. चाहिए। No, sir. तो वो जो डीसी सिग्नल है उसका लेवल हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा, राइट? सो Yes, दैट्स sir. व्हाई दिस स्टेज इज कॉल्ड एज योर लेवल शिफ्टर स्टेज। एंड व्हाट इज इनसाइड दिस लेवल शिफ्टर स्टेज? सो इनसाइड दिस लेवल शिफ्टर स्टेज वी आर यूजिंग एमिटर फॉलोअर सर्किट। एमिटर follower circuit. Emitter follower circuit, what it will do, it will just maintain the constant gain, but the DC level, right, the DC level is shifted. The DC level is shifted, right? The DC level is shifted in previous stage. बराबर है? ये स्टेज में डीसी लेवल शिफ्ट हो रहा है ना बिकॉज ऑफ एम्पलीफायर। सो दिस स्टेज विल bring DC, it will bring DC level, to ground। ग्राउंड मतलब क्या? 0 वोल्ट्स। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? ओके, नाउ यस नो समझ में आ रहा है ना?
Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर. तो ये हो गया Yes, थर्ड sir. ब्लॉक, ये हो गया थर्ड ब्लॉक। अभी फाइनल ब्लॉक जो आउटपुट स्टेज है, आउटपुट स्टेज क्या होगा, तो ये आउटपुट स्टेज होता है, ये यहाँ पर होगा पुश पुल एम्पलीफायर, राइट। सो पुश पुल एम्पलीफायर क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये आपका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है इसको वेरी और इट विल प्रोवाइड वेरी लो आउटपुट रेजिस्टेंस एंड इट विल इंक्रीज द गेन, राइट, इट विल आल्सो इंक्रीज द गेन। समझ में आया? आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा गेन मिलना चाहिए ना, यस नो, और आउटपुट का रेजिस्टेंस भी कम होना चाहिए, Yes, sir. getting? So basically this is your block diagram of operational amplifier. This is your block diagram of operational amplifier. It contains of 4 stages, and these are the functions of for the four stages, right? Now ये जो मैंने ब्लॉक निकाले हैं ना, तो ये ब्लॉक के अंदर सर्किट रहेगा, जैसे डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट में 2 ट्रांजिस्टर रहेंगे, उसके बाइसिंग सर्किट रहेंगे, उसको आरबी रहेगा, आरसी रहेगा, आरई रहेगा, एंड ऑल दैट थिंग्स। बट इन योर सिलेबस दैट डिटेल्ड सर्किट इज नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि इतना बड़ा सर्किट हो जाएगा, उसमें मे बी 14-15 transistors will be there, and then you means it will become very complex circuit. So that is not expected, only this much is expected. You should be able to understand how many parts are there in this amplifier, how many blocks are present in the amplifier. Yes, no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So let me just go here, and if you can see the classwork, right, I have given the PPTs, right? So what we have seen, we will just take a look over it. Okay, so we have seen these things. Oops, just wait a second. Okay, यूनिट नंबर 5 का खुल गया मेरे तरफ से, यूनिट नंबर 2, राइट, यूनिट नंबर 3A. So we have seen this thing yesterday, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we have started with operational amplifier today. So what is operational amplifier? It is linear integrated circuit. Why it is called as linear? Because yes, why it is called as linear? Because just tell me the output equation. V naught is equal to A into V1 minus V. okay, AD into ED, right? Yes, sir. Yes, sir. Can I say Y is equal to MX? Yes, sir. Yes, sir. Yes, This sir. is equation of a straight line. So that's why it is called as your linear integrated circuit, where the linear equation is being followed. Yes. Yes, sir. Okay. And then we have seen that it is a very high gain amplifier, right? Uses many times it is having various applications, right? It will amplify all the signals, and then it is used for computational purpose, for addition, subtraction, multiplication, division, or to be specific, integration and differentiation. And we can have a lot of applications out of it. So this is the symbol which we have seen, right? A quick revision. And then this is your operational amplifier IC pin diagram. So if you go in market, you can get IC 741, right? So that is your operational amplifier IC. Depending on the package, right, we can get dual inline package or flat pin package, right? But basically it is having 8 terminals, right? So out of these 8 terminals, we have seen the 5 terminals, right? Remaining 3 terminals we will be seeing later on. Is it okay? Okay, Yes, sir. sir. Okay, sir. And then we have seen also this thing, block diagram of operational amplifier. So what is inside this IC? So we are having 4 stages: input stage, intermediate stage, level shifting stage, and output stage. And we have seen exactly the same thing, same diagram, right? Yes, sir. Yes, sir. Right. So this is in this amplifier. Okay. So this diagram we have seen in detail, and what are the functions of each and every block, right? And inside this block diagram, there is if we combine two blocks, that is a differential amplifier,
And if you want to see the circuit, so this is the detailed circuit of the block diagram, right? What is present in the block diagram, but this we are not means we will not go in that detail, because you cannot buy heart the circuit, and it's not expected from you also, because differential amplifier itself is a very big topic, right? But here you can see that देखिए, दिस इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में दो ट्रांजिस्टर्स को यूज किया है, राइट? कैन यू सी दिस? ट्रांजिस्टर नंबर 1, ट्रांजिस्टर नंबर 2, Yes, दोनों sir. के Yes, sir. कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। एमिटर इज कॉमन टू इनपुट एंड आउटपुट, तो एक यहाँ से इनपुट जा रहा है, दूसरा यहाँ से इनपुट जा रहा है, राइट? सो दिस इज योर इनपुट नंबर 1, दिस इज योर इनपुट नंबर 2, राइट? सो एक है इन्वर्टिंग, दूसरा आपका नॉन इन्वर्टिंग। यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And it will give you the output right across the collector। कलेक्टर पे हम आउटपुट लेते हैं, और ये फिर से हम दूसरे के डिफरेंस को, दूसरे के एमिटर को देते हैं। तो यहाँ पर फिर से ट्रांजिस्टर नंबर 1, ट्रांजिस्टर नंबर 2, एंड देन that will be going on। okay, Yes, sir. so this is the internal circuit diagram of the operational amplifier which we have seen, and then yes, we have seen the operation in detail, right? Like we have seen this, what is the function of input stage, intermediate stage, level shifting stage, and all that, okay? And finally, at the starting, I have told you that there are three modes, right? Single-ended mode, in that inverting and non-inverting, then differential mode and common mode, right? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now next is your operational amplifier parameters. So this many 10 parameters are there which we need to see, but we will start it tomorrow. Any problem in this? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. It is easy hai? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay.